hope you all are doing well. Today we are going to do the question answer of cleaning the playground. Okay, and this chapter is from class 1 ICSE board. So let's start the question answer. The first one is, where do Nisha and her friends go during the lunch break? निशा और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो लंच ब्रेक पे कहाँ गए थे? तो वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग प्लेग्राउंड में गए थे खेलने के लिए. तो इसका आंसर होगा निशा and her friends go to play in the school playground during lunch break. Okay, full stop. Nisha and her friends go to play in the school playground during lunch break. Now, the second question is, we cannot play here, says Muthu. Why does Muthu say this? हम लोग यहाँ पे नहीं खेल सकते हैं, ऐसा मुत्थू ने क्यों कहा था? तो इसका होगा आंसर, मुत्थू says this because the playground so dirty. Muthu says this because the playground was so dirty. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू निशा एंड हर फ्रेंड्स क्लीन द प्लेग्राउंड? निशा और उसके जो फ्रेंड्स थे वो प्लेग्राउंड को कैसे साफ किए? ठीक है, तो इसका आंसर है, निशा एंड हर फ्रेंड्स क्लीन द प्लेग्राउंड बाय पुटिंग द गार्बेज. ठीक है, गार्बेज का मतलब कूड़ा, लाइक फूड क्रम्स, एम्प्टी फूड पैकेट्स ETC इन द बिग डस्टबिन. ETC का मतलब एटसेट्रा होता है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें बुक्स में दी गई हैं, वो किस तरीके से वो क्या बोलते हैं प्लेग्राउंड को क्लीन किए थे. जैसे टॉफी रैपर्स भी उसमें लिखा हुआ है और क्राफ्ट पेपर भी लिखा हुआ है. अगर आपको और एक्सटेंड करना है तो आप उन दोनों को भी डाल सकते हैं यहाँ गार्बेज में. ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर क्लियर हो गया. निशा और उसके फ्रेंड्स जो थे वो प्लेग्राउंड को क्या कैसे साफ किए? सारे कूड़े को लेकर के एक बड़े से डस्टबिन में डाल करके. निशा एंड हर फ्रेंड्स क्लीन द प्लेग्राउंड बाय पुटिंग द गार्बेज लाइक फूड क्रम्स, एम्प्टी फूड पैकेट्स ETC इन द बिग डस्टबिन. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, what do Nisha and her friends make with the help of their teachers? निशा और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो टीचर्स का हेल्प लेकर के क्या बनाए थे? हाँ, तो इसका आंसर है, निशा एंड हर फ्रेंड्स मेक अ साइन ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स. टीचर्स की मदद के साथ निशा और उसके फ्रेंड ने क्या एक साइन बनाया था, जिसको उन लोगों ने मिलकर के स्कूल के नोटिस बोर्ड पे उसको डाल दिया था. और वो साइन क्या था? उस साइन था, उसमें लिखा हुआ था, प्लीज कीप द प्लेग्राउंड क्लीन. ठीक है, कि प्लेग्राउंड को साफ सुथरा रखा जाए. साइन का मतलब चिन्ह होता है. ठीक, एक बार मैं पूरी क्वेश्चंस को फिर से एक बार रीड कर देती हूँ, आप लोगों को फिर समझने में आसान होगा. The first question is, where do Nisha and her friends go during lunch break? Nisha and her friends go to play in the school playground during lunch break. We cannot play here, says Muthu. Why does Muthu say this? Muthu says this because the playground was so dirty. Okay, now the third one is, now the question number 3, how do Nisha and her friends clean the playground? Nisha and her friends clean the playground by putting the garbage like food crumbs, empty food packets ETC in the big dustbin. Okay, now the question number 4 is, what do Nisha and her friends make with the help of their teachers? The answer is, Nisha and her friends make a sign on the school notice board with the help of their teachers.
Okay, so that's it for today. Thank you